बोलो सर वो लास्ट वाला केस उतना ही था एट हायर फ्रीक्वेंसी। कितना थर्ड केस बता रहे थे ना, एफ इज ग्रेटर देन एफ एच, वहां से बंद हो गया था। अच्छा वहां से बंद हो गया था सो if f is greater than fh okay so your gain okay so your gain will decrease okay fh तक तो हम मानते हैं कि गेन कांस्टेंट है हालांकि फिर 3 dB से कम हो रहा है but okay still we say that it is almost constant in dB okay and if you increase the frequency greater than fh okay then what will happen your v output okay upon v input का जो है that will be your less than af okay less than af मतलब af से कम होता जाएगा if frequency is higher okay or up to fh it is constant okay so that was first order low pass filter okay now we want to make high pass second order low pass filter so what we are doing additionally we are putting one more capacitor here so there are already one capacitor now सर ये ऑर्डर का पता कैपेसिटर सेट करने से पता चलता है। हाँ मतलब इसका जो स्लोप है वो इंक्रीज Yes, रहता है ड्रॉप फास्ट हो जाता है इसलिए इसको सेकंड ऑर्डर बोलते हैं ठीक है और वो कैपेसिटर लगने से हो जाता हाँ है। कैपेसिटर लगने से हो जाता है ओके सो हियर वी आर Okay, पुटिंग sir. टू कैपेसिटर व्हेन यू पुट टू कैपेसिटर this frequency high cutoff frequency that will be 2 pi r2 r3 c2 c3 and here the formula for magnitude of v output upon v input okay earlier that was 1 plus f upon fh का square अभी ये 4 हो गया okay gain same है so you try to prove this one okay and tomorrow we'll discuss whether you can get or not okay so this is for second order low pass filter if you are not drawn you can draw now okay सर मिटाइएगा ना तो। हाँ and then now high pass filter okay so high pass filter एक सेकंड सर, मिटाइएगा नहीं। बताना नहीं था क्या थोड़ा सा उसमें पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ दो बस मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ ओके सर वो लिखा हुआ जो आपने वापस ड्रॉ कर रहा हूँ उनको तो लिखा सर आपने सेकेंड ऑर्डर भी एक्सप्लेन कर दिया था क्या सर? so fh is equal to 2 pi okay r2 r3 c2 c3 okay v output v input okay this is af under root 1 plus f upon f naught power 4 okay af 1 plus rf upon r1 okay so this is your second order okay now put the heading first order high pass filter first order high pass filter first order high pass filter तो बस कैपेसिटर की पोजीशन चेंज हो जाएगी सर्किट वही रहेगा ओके देयर विल बी चेंज इन द पोजीशन ऑफ कैपेसिटर ओके जहां पर पहले रेजिस्टेंस था वह कैपेसिटेंस आ जाएगा और जहां पर कैपेसिटेंस है वह रेजिस्टेंस आ जाएगा सो इफ आई सेम सर्किट वी हैव माइनस एक मिनट दे दो मुझे ये इंक भी खत्म हो गया सर so this is
ब्रिंक डालने पे भी नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया? So in high pass filter, okay, we have op-amp minus plus, okay, and then we have same kind of circuit. This is grounded, okay. We have here feedback. This is V naught. So this is R. So this is RF, and here instead of capacitor we have a resistance R. Capacitors in series, okay, and then we have a input resistance V input plus minus, okay, and here say it is RL, okay. Now calculate what is, if this is C, what is the expression for V naught? Calculate. So what will be V naught? So this is inverting or inverting or non-inverting? Inverting. So Non-inverting. non-inverting है, okay, because input is non-inverting. So 1 plus RF upon R, okay. Here it is V1. So what is the value of V1? R upon R SC upon, plus R into V. okay. So your V will be R upon, okay, R plus or minus JXC, okay, Yes, into V input, okay. So put the values now and solve. So if you want V naught, okay, so your V naught will be 1 plus RF upon R V1, and this is equal to 1 plus RF upon R. सर ये V1 का एक्सप्रेशन हाँ बता रहा हूँ JXC, okay. So for example, see अभी क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग है ना, तो जहाँ पे जितना यहाँ पर वोल्टेज आएगा इस यस पे सर उतना ही तो एम्पलीफाई करेगा. तो इस पे यहाँ वोल्टेज कितना आ रहा है, ये टोटल वी इनपुट है, इसमें आपने केवी लगा दिया, ओके. ओके सर तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है V1, सो दैट V1 इक्वल टू आर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ओके. वोल्टेज डिवाइडर लगा दिया R माइनस JXC. So ओके सर now if you solve further, okay, your V naught upon V input will be equal to 1 plus RF, ये तो हो जाएगा आपका AF, ओके. now इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, J 2 pi SCR upon 1 plus J okay. 2 pi SCR. So I am writing directly, it should come 1 minus J, okay, FL, say this time this is FL upon F. आपकी जो कट ऑफ है ऊपर आ गया, FL upon F, okay. This is the formula, and if you write the magnitude
Okay, if you write the magnitude of V upon V input, okay, that will come same like we have done earlier, AF, okay, under root 1 plus small fl upon f का square, okay, and जो phi जो है, and phi is equal to minus plus, this time is plus tan inverse, okay, fl upon f, okay, these are the formulas. चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ओके, सो अब की ये माइनस आ रहा है, तो यू कैन राइट मैग्नीट्यूड इनटू ई पावर माइनस जे थीटा, ऊपर जाएगा तो प्लस जे फाइव हो जाएगा, सो दिस टाइम tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा एफ एल अपॉन एफ, ओके। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको क्या रखते हो, मैग्नीट्यूड ओके इनटू ई पावर आई फाइव जे फाइव, ओके, माइनस है तो माइनस जे फाइव, ऊपर जाएगा तो प्लस जे फाइव, वेयर फाइव इज व्हाट, फाइव इज tan इनवर्स एफ एल अपॉन एफ, ओके। So this is for your high pass filter, okay. So if you put the values here, just give me 1 minute. So the formula is correct, f upon LH, this is low pass, okay, high pass, okay, this AF FL upper FL upper, ठीक है. So this is your circuit, okay. Now you can put the values here and you can find out, okay. तो क्या होगा, if it is f is 0 तब क्या हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर इनफिनिटी की तरफ भाग जाएगा। हाँ, तो गेन फाई इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, और गेन कितना हो जाएगा, तो गेन हो जाएगा एफ जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या ये सर F0 की FL0 एफ हो जाएगा सर, एफ जीरो F0 हाँ तब एफ के इनफिनिटी बराबर हो जाएगा, और एफ गेन इक्वल टू एफ। और एफ इक्वल टू एफ एल तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो Yes, sir. तो अभी क्या हो जाएगा, और फिर उसके बाद में अगर और इसको और लो करोगे इससे एफ एल से लो करोगे, तो इसकी जो नीचे की फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी लॉस, ओके। और जैसे ही एफ एल को बड़ा करोगे इससे, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या एफ एल ज्यादा हो तो क्या होगा, ये टर्म छोटी हो जाएगी, तो गेन वापस कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। सो दिस विल बी, इफ यू प्लॉट दिस वन, so if I plot this graph, so this graph will come as a voltage gain, okay. So this will be like this, okay, and here the same thing, there is a 20 dB per decade, okay, and this frequency after FL, this gain will become constant, okay. So this is your high pass filter, okay. Now problems, exam questions आए होंगे, देखेंगे प्रॉब्लम्स इस पे कल करेंगे हम लोग, ओके। सो ये जो सेकंड ऑर्डर है, ओके, सेकंड ऑर्डर लो पास एंड सेकंड ऑर्डर हाई पास, ओके, यू ट्राई दैट इफ यू हैव अ मटेरियल, यू ट्राई दैट, अदरवाइज टुमारो वील डिस्कस एंड वील डू सम प्रॉब्लम ऑन सर दैट। हाई पास में तो सेकेंड ऑर्डर में एक और कैपेसिटर लग जाएगा, वो तुम देख के बताओ, ओके सर। ठीक है, कल बताओ मुझे। सर उसमें एक बार और सर वो लगता है, क्या कहते हैं, फीडबैक सर्किट सा रजिस्टेंस लगता है इसमें एक बार और, लगाते हैं। रजिस्टेंस, फीडबैक सर, हाँ, आरसी सर्किट दो लगते हैं। फीडबैक अभी जैसे एक आरसी सर्किट लगाए ना यहाँ पे, अब दो एक आर एक सी लग जाएगा इसके अंदर, और सर फीडबैक सर्किट नहीं आएगा सर उसमें। नहीं और नहीं आएगा, बस इतना ही फर्क आएगा, ये जो आरसी है एक आरसी और टूट जाएगा यहाँ पर। ओके सर, सो आई एम स्टॉपिंग हियर, कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।